The direction ratio of two lines are connected by relation P plus Q plus R 0, P square plus Q square R square 0. Find angle between them. देखिए बेटा, P square plus Q square is equal to क्या हो गया माइनस R square. इक्वेशन नंबर 1. इसके ऊपर से P plus Q is equal to क्या हो जाएगा माइनस ऑफ R. इसके ऊपर से इक्वेशन नंबर 2 रख दो इसके अंदर में. ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ओके माइनस ऑफ पी प्लस क्यू उसका वाला स्क्वायर. ठीक है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर. ये बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. चेक कर लो अच्छे से. मेरे ख्याल से कोई गलती हो रही थी प्रॉब्लम यार. प्लस ही देखा आर. ठीक है, देखते गलती कुछ होगी. माइनस टाइम्स देखो पी स्क्वायर की स्क्वायर कैंसिल में होगा ना. ठीक है, देखते माइनस बराबर. क्या प्रॉब्लम तो इनका साला बहुत बड़ा गड़बड़ कर देते हैं लोग. माइनस माइनस हाँ ना, गलती हो रही है इनकी बराबर. गलती है. वो तो बोला गलती है इनकी इसमें. बेटा यहाँ माइनस चाहिए बेटा. वही तो बोला मैं गलती यहाँ माइनस चाहिए. साला ऐसे गड़बड़ कर दे प्रॉब्लम में. अब ये करेक्ट, अब करेक्ट हो गया. ठीक है प्रभु जी. अच्छा होगा साला भी. ओके, p square q square get cancel. While pq is equal to 0, p into q is equal to 0. So p into q is equal to 0 implies that p is equal to 0 or q is equal to 0. एक जीरो होगा तो दूसरे को पकड़ते. कंसीडर केस 1 फर्स्ट. कंसीडर p is equal to 0. p is equal to 0 अपन रख दिया इधर में. p plus q is equal to माइनस r में. ठीक है, देखिए तो q is equal to क्या हो जाएगा आपका माइनस ऑफ r. समझे? ये रख दो 0. तो q क्या बन जाएगा माइनस ऑफ r. आपके ये जो पी क्यू आर जो थे पी क्यू आर ये क्या बन गए आपके. ये बन गए 0 माइनस क्यू क्या है माइनस ऑफ आर है. क्यू क्यू क्या है यस माइनस ऑफ आर और पी पी आर आर क्या आरिश है. आर क्या आरिश है ना. आर क्या आरिश है. तो डायरेक्शन रेशियोज आर डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे 0 -1 और +1 ये कोएफिशिएंट. अब ऐसे लिए अपन q इज इक्वल टू 0 कंसीडर अभी q इज इक्वल टू 0. तो p इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस r होगा. बराबर है. ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट माइनस r 0 और क्या बन गए r. डायरेक्शन रेशियो r ये बन जाएंगे -1 0 और 1 आया. ये आपको ऐसे मिल गए. देखो अभी A1 B1 C1 आपको मिल गया 0 -1 1 और A2 B2 C2 क्या मिल गया -1 0 1 आया. So cos theta angle between them cos theta A1 A2
b1 b2 c1 c2 upon under root of a1 square plus b1 square plus c1 square under root of a2 square plus b2 square plus c2 square. Okay, so cos theta is equal to 0 0 plus 0 plus 1 upon under root of 2 under root of 2 म्हणजे cos theta is equal to 1 upon 2. तो कौन से एंगल को होता है 1 upon 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3 पाई बाय 3 60. The direction ratio of AB bar are -2 to 1 if A 145 and length AB is equal to 6 units find the coordinate of B. Find the coordinate of B. Coordinate of B. Find coordinate of B. Length AB. N काढ ला. Okay. NMN मिळाला. Coordinate of the points which are at a distance of D units. Okay. x1 plus minus LD, y2 plus minus MD. Okay. ठीक है. बघा तुम्हाला काय दिलाय डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB कितना दिया है -2 to 1. याच्यावरून मला L काढता येतं. L is equal to plus minus A upon under root of A square plus B square plus C square. M is equal to plus minus B upon under root of this same. M is equal to plus minus C upon under root of this. So L is equal to plus minus A म्हणजे -2 upon 2 plus 2 plus 2 4 plus 4 plus 1 9 म्हणजे 3. M is equal to plus minus of 2 upon 3. N is equal to plus minus of 1 upon 3. ठीक है. given x1 y1 z1 दिस A दिया गया है 1 4 5. लेट B कोऑर्डिनेट्स लिए अपन ने x2 y2 z2. ओके. Also given D is equal to 6. So therefore x2 is equal to plus minus of L x1 plus minus of L into D. y2 y1 plus minus of M into D. z2 z1 plus minus of n1 into ds. ओके. तो पास में LMNH निकाले अपन ने. ओके. So x2 is equal to ये x1 1 plus minus 2 upon 3. y2 4 plus minus 2 upon 3 into D 6. Then z2 5 plus minus 6 into कितना है 1 upon 3. इसको सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा ये x2 is equal to पहले अपन ने माइनस लिया है ना तो क्या होगा 1 minus 2 by 3 and
प्लस लिया तो 3 कैंसिल हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा ना, 3 2 सा 6 है ना, 1 प्लस 4, इसको लिया y2, 4 प्लस 4 एंड 4 माइनस ऑफ 4, z2 के लिए लिया 5 प्लस 2 and 5 minus of 2. So therefore b के coordinates x2 is equal to तेरा बन जाएगा ये -3 और 5, y2 is equal to 8 और ये कितना हो जाएगा 0, z2 is equal to 7 एंड 3, यानी दोनों डायरेक्शन में उसके वाले समझ में आ रहा है। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ B are -3, 8, 7 and 5, 0, 3। चांगला प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम आपको काम में आने वाला है मिरर की, इसमें जब मिरर इमेज का काम करेंगे ना तो सेम क्राइटेरिया आने वाला, लाइन चैप्टर जो पढ़ोगे आप लाइन प्लेन में, वहां पे आती मिरर इमेज। हाँ देखो, if L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 are the direction cosine of three mutually perpendicular lines are the direction cosine of three mutually perpendicular lines show that the line OP whose direction cosine are proportional to L1 plus L2 plus L3 M1 plus M2 plus M3 N1 plus N2 plus N3 makes equal angle with the lines OA, OB and OC respectively. बघा बेटा क्या दिया है ये, these are the direction, देखो solution direction cosine of OA L1 L1 M1 N1 direction cosine of
OB, L2, M2, N2. Direction cosine of OC, L3, M3, M3. Okay, given OA, OB, OC are mutually perpendicular, that is OA into OB is equal to 0, OB dot OC is equal to 0, OA dot OC is equal to 0. This implies L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2 is equal to 0. L2, L3, M2, M3 plus N2, M3 is equal to 0. This implies L1, L3 plus M1, M3 plus N1, N3 is equal to 0. ओके देख लीजिए ये अभी हो गया इसका अब डिस्टेंस इज इक्वल टू डी स्क्वायर L1 plus L2 plus L3 का स्क्वायर प्लस distance between them M1 plus M2 plus N3 का स्क्वायर प्लस N1 plus N2 plus N3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया आपने आपको मिलेगा L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर प्लस N3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L1 L3 प्लस 2 टाइम्स M1 M2 plus M2 M3 plus M1 M3 plus 2 times N1 N2 plus N2 N3 plus N1 N3 आता याला ऍडजस्ट केलं बेटा आपण हा असा ऍडजस्ट केला L1 square plus M1 square plus N1 square plus L2 square plus M2 square plus N2 square plus N1 square plus L3 square plus M3 square plus N3 square plus 2 times L1 L2 M1 M2 plus N1 N2 plus 2 times L2 L3 plus M2 M3 plus N1 N3 N2 N3 plus 2 times L1 L3 plus M1 M3 plus N1 N3 allo beta this
This is equals to 1 plus 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 0 because the given result says. So distance d square is equal to 3. This implies d is equal to plus minus of 3. क्या आया? प्लस माइनस ऑफ 3. तो अपन क्या निकालना है? इसके डायरेक्ट इतना लिख लो बेटा, राइट डाउन. जैसा अपना ये ऐसा ये हो गया, ये θ1 नाम का एंगल हो गया, ये O है, इसको नाम दिया OP, इसको नाम दिया आपने OA. इसके डायरेक्शन रेशियो कौन से? L1 M1 N1. इसके कौन से है? L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन रूट 3. M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन रूट 3. N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस. इसके बीच में का एंगल निकालना है ना? तो cos θ1 L1 इंटू प्लस माइनस में L1 प्लस L2 प्लस L3 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस M1 इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 अपॉन रूट 3 प्लस माइनस N1 प्लस N2 प्लस N3 अपॉन रूट 3. ओके, देखिए ये बन जाएगा प्लस माइनस ऑफ L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर प्लस L2 M2 प्लस L1 L2 सॉरी ऐसा होगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 यार N1 N2 प्लस L1 L3 प्लस M1 M3 प्लस N1 N3. ठीक है, तीन होगा ना? यस. हाँ, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय रूट 3. इसको सॉल्व किया कितना का प्रॉब्लम 1 हो गई. ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो गया प्लस माइनस 1 प्लस 0 अपॉन रूट 3. सो देयरफॉर cos θ1 is equal to plus minus of 1 upon root 3. Hello? Similarly, cos θ2 is equal to plus minus of 1 upon root 3. Cos θ3 is equal to plus minus of 1 upon root 3. So cos θ1 is equal to cos θ2 is equal to cos θ3. This implies θ1 is equal to θ2 is equal to θ3. If the edges of rectangular parallel pipe are A, B, C respectively, then the angle between the four diagonals are given by. Then the angle between the four diagonal diagonals are given by
given by cos inverse of a square plus minus b square plus minus c square upon a square plus b square plus c square. Four diagonals are OA, CD, EA, F, F, B respectively. FB respectively. Okay. So direction ratio of OA R OP 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 R A B C. So therefore OP bar is equal to A I cap plus B J cap plus C K cap. Similarly, logis C D bar is equal to C D bar D में से गया A I cap plus B J cap minus C K cap. Then C D नंतर E A bar is equal to E में से E गया A I cap minus B J cap plus C K cap. ठीक है ये ना दोनों नेगेटिव ना सी डी तो ए माइनस जीरो बी माइनस जीरो माइनस सी वैसा ही सी डी ऐसा लेते हैं अपन सी डी देन ए ए ई पाहिजे ए ई नंतर बी एफ पाहिजे होता तर हा सी झाल्यानंतर ए ई ई मध्ये बरोबर आहे हा नंतर बी एफ माइनस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप ओके सो ओपी बार डॉट सी डी बार इज इक्वल टू mod of CD bar into cos of the angle between them theta 1 ओके तो OP बार डॉट CD बार घेतला आपण ते A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर मायनस ऑफ C स्क्वेअर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वेअर प्लस B स्क्वेअर प्लस C स्क्वेअर अंडर रूट ऑफ A square plus B square plus C square cos theta 1. Okay, so cos theta 1 is equal to A square plus B square minus C square upon under root of A square plus B square plus C square. Okay, then दूसरा OP bar dot AE bar is equal to mod of OP bar mod of A bar cos theta 2. So cos theta 2 is equal to it is minus B square A square minus B square plus C square upon A square plus B square plus C square. नंतर OP bar dot BF bar
mod of OP bar mod of BF bar cos theta 3. So therefore cos of theta 3 is equal to minus a square plus b square plus c square upon a square plus b square plus c square है ना। ये तीनों को क्लब किया तो अपने को मिल जाता है प्लस माइनस एक नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये एक रिजल्ट, ये दूसरा रिजल्ट और ये तीसरा रिजल्ट। राइट डाउन लिख लीजिए बेटा। तो उसी को प्लस माइनस कंबाइन करते हैं उसको रिजल्ट। एक्चुअली मैंने क्या किया इसको मैंने ओपी सी डी बार लिया। मैं इसको अगर डीसी बार लेता इसमें दो नेगेटिव आते थे, समझे ना। फिर वो प्लस माइनस चलता था, मैंने उसका रिवर्स में लिया। If mod of u bar is equal to 3 and vector u bar is equally inclined to the unit vector I cap, j cap and k cap, find u bar, okay, equally inclined. बघा a vector u bar equally inclined to the unit vector I j k, find u cap. Solution: given alpha is equal to beta is equal to gamma, we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to 1. So cos square alpha plus cos square alpha plus cos square alpha is equal to 1. So 3 times cos square alpha is equal to 1. So cos square alpha 1 by 3. So cos alpha plus minus of 1 upon root 3. ठीक है। So therefore देखिए that u bar is equally inclined. Okay. So u bar is equal to this, ये हो जाएगा अपना this L I, तो yes u bar is equal to mod of u into L I bar plus mj bar plus n k bar. So ये मॉड में u bar, so u cap is equal mod कितना दिया है 3 into L मतलब this is called as a L, m is equal to cos beta सेम आएगा plus minus 1 upon root 3 that is equal to m, then cos gamma plus minus 1 upon root 3 is equal to n. Okay, so 3 times plus minus of 1 upon root 3 I cap plus 1 upon root 3 j cap plus minus 1 upon root 3 k cap. So u bar is equal to plus minus 3 upon root 3. Okay, I cap plus j cap plus k cap. So therefore u bar is equal to plus minus of
√3 I cap plus j cap plus k cap. ये आएगा आंसर।